छोटा सा एक टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, बट इट इज जनरली नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, लेकिन फिर भी दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11th, तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, है ना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वी विल डिराइव दैट रिलेशनशिप एंड देन विल मूव। टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, हमारे पास वी डिड ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ना, साथ में था ना। ठीक है, relationship between molality and molarity. So if you see molality small m, it is equal to the number of moles of solute divided by the mass of solvent in kg. ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था that it is what, it is number of moles of solute nb। nb को हम लोग क्या लिख सकते हैं, we had this formula ना, आपके पास फॉर्मूला क्या था, wb into 1000 divided by molar mass of the solute into the mass of solvent in grams। ऐसे था, yes or no, please tell me guys। सही है, यस सर। ठीक है, इसको ऐसे ही समझिए बिल्कुल, ये हमारे पास फॉर्मूला है, बट इसमें ना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वी विल, हम ये मान के चलते हैं कि आपको मोलालिटी दिया हुआ है, व्हाट यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन गिवन मोलालिटी, गिवन डेटा आपके पास मोलालिटी है एंड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ solution, these two things are given to you। मोलालिटी आपको m दिया हुआ, सो इफ यू हैव m मोलर सोल्यूशन, मोलालिटी क्या होता है, मतलब आपके पास क्या है, यू हैव m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मेक सेंस, अगर आपके पास 2 मोलर है, 3 मोलर है, 0.1 m दिया है, वट एवर इट इज गिवन, दैट मीन्स उतना मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नाउ वी हैव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और आपके पास डेंसिटी दिया हुआ, दिस डेंसिटी विल बी जनरली गिवन इन grams per ml। So if I am taking 1 liter of solution, so 1 liter will be equal to how much, 1000 ml। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1000 ml और आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्म, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो वी हैव द वॉल्यूम इज हियर एज 1000 ml। इसी 1000 ml जो 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, इसका मास क्या होगा, द मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे आपके पास है डेंसिटी और आपको मास निकाला, तो V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ml, तो 1000 इंटू डी, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूशन। Now mass of solution, it is also made up of only two things, that is mass of solvent plus mass of solute। Now mass of solvent आपको चाहिए in the formula, so I can write WA is equal to the W solution minus W of solute। ठीक है, अब आपके पास देखिए हाउ मेनी मोल्स, यहाँ पे आपके पास यू हैव m मोल्स, m मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, m मोल्स ऑफ सोल्यूट का कुछ मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, WB विल बी इक्वल टू m मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज मोल्स, 1 मोल 2 मोल 3 मोल मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, so we have got WB also, so I can write WA, it is equal to mass of solution minus the molarity multiplied by molar mass of the solute, like this। तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों टर्म्स आ गए, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, m मोल्स आपके पास है, तो व्हाट एवर द मोलारिटी, आप उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट इन कर दीजिएगा, दैट इज मोलारिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये ऑल ऑफ दीज विल बी इन ग्राम्स। इस आपके पास जो WA आएगा ना, WA दिस इज ऑल इन ग्राम्स, WA को अगर आप kg में लिखेंगे तो दिस होल थिंग विल बी डिवाइड बाय 1000। ठीक है, दिस होल थिंग विल बी डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चल जाएगा, सो यू विल हैव m into 1000 divided by 1000 d, that is the
mass of solution minus m into the molar mass of solute. So this is what the relationship between molality and molarity. अगर आपके पास, if you have been given the molarity and the density, तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं उससे? You can calculate the molality from that data. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन. Copy this down, raise your hand once you're done. Aslan and Fadil, you guys are again late. आप लोग को मैसेज नहीं मिल रहा क्या टाइम पे? सर Aslan and मिल Fadil. रहा है। मेरा बायो एग्जाम है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था सर। सैटरडे को एक बायो एग्जाम, मैं प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सैटरडे को है ना? यस सर, फिर भी प्रिपेयर करना है ना, लाइक। हाँ प्रिपेयर तो करना है, लेकिन क्लास भी तो करनी यस है सर। ना? हाउ एम आई सपोज टू प्रिपेयर फॉर दैट सर? इसके बाद एक फिजिक्स का क्लास है, बाद में एक और केमिस्ट्री का क्लास है। कल मुझे स्कूल ओह अच्छा. जाना है एक बायोलॉजी रिविजन क्लास के लिए। वो भी मैम ने अच्छा, पोर्शन आज भेजा है आपके प्रिपेयर लगातार, करने के लिए। अच्छा बहुत लगातार आपके क्लासेस हो जा रहे हैं. अच्छा. सो कैसे क्या कर रहे हैं प्रिपेयर? पूरा बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब पूरा बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट है आपका? यस सर। अच्छा, कब हुआ बायो का कंप्लीट? एग्जाम के एक दो हफ्ते पहले खत्म हो गया था। थिंक सो अराउंड वेकेशन टाइम, एक्चुअली वेकेशन से ही पहले खत्म हो गया था, दिसंबर के टाइम पे। अच्छा, स्कूल में? यस सर। नहीं नहीं, आप कहीं क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कहीं और, या स्कूल से हो जाता है? स्कूल से हो जाता है सर। स्कूल से हो जाता है बायोलॉजी, तब तो फिर ठीक है. चलिए. Arslan, you're going to, are you writing, Arslan? यस सर हम। जी ठीक है. Just raise your hand once you're done. Okay, you're done. ठीक. Write the next topic, that is solubility. So in this particular part, we are going to just learn about the solubility of solid solute, and in general also, like if you are dissolving something, then how much of it is going to get dissolved. और solubility जब भी बात की जाती है ना, तो जनरली ये बात की जाती है solids के लिए. ठीक है. So we'll be looking at mostly at solids, and in detail for gases and liquids we'll be looking at later on. यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ और ऑल्सो वगैरह पढ़ेंगे.
ठीक है. Now what is solubility? Then please write the solubility of a substance. The solubility of a substance is the amount that can be dissolved in fixed amount of solvent at a given temperature. ठीक है. अब आपके पास क्या है? सॉल्यूशंस के तीन टाइप होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज what we call as unsaturated solution. Unsaturated solution is what it is. Further addition of solute is possible here. Further addition of solute is possible. उसके बाद आता है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन further addition of solute is not possible. ठीक है. उसके बाद है आपके पास सुपर सैचुरेटेड. डज एनीवन नो व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? हाँ जी, किसी को याद है व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? नो वन. सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड में क्या जाता है? देखिए, यू हैव टू ऐड सोल्यूट बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. तो आप क्या करेंगे उसको? आप सबसे पहले चीनी, जैसे मान लीजिए चीनी आपने डाला. ठीक है. पानी में आपने क्या डाला? चीनी डाला. ठीक. एंड once you have added sugar, then you will dissolve it, dissolve it, dissolve it, dissolve it, and keep dissolving it. After that, when you are adding any more sugar, then you are getting sugar particles. It is not getting dissolved. फिर आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया. ठीक है. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया. आपने फिर से ऐड करना चालू किया सॉल्यूशन वाटर में sugar. Now, when you are adding sugar at an elevated temperature inside water, then what would happen? Then obviously it is going to dissolve more sugar. And जो चाशनी बन जाती है ना, the sugar syrup that we say. So that sugar syrup, it is super saturated. That means even at 25 degrees Celsius, it is having sugar molecules, or rather the sugar dissolved in it, it is beyond the saturation point. Okay. So when we have added solute beyond the saturation point, then what will happen? Then we say that it is super saturated solution. इसमें क्या होगा ना, इफ यू आर गोइंग टू फर्दर एड, जनरली स्पीकिंग इट्स क्वाइट अनस्टेबल टाइप ऑफ सॉल्यूशन. बहुत ज्यादा देर मतलब टिक सकता है, बट इफ एज सून एज यू आर गोइंग टू ऐड मोर सॉल्यूट इन इट, देन क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट्स टू अकर. ठीक है. तो व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? राइट, इट कंटेन्स और अदर कैसे लिखे? dissolving solute is dissolved beyond saturation point. Solute is dissolved beyond saturation point. ठीक है. उसके ऊपर फिर आप ले गए सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर. ठीक. नाउ ये तो आपके पास सॉल्युबिलिटी हो गया. देन यू विल राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीस डेफिनेशंस. दे आर नॉट जनरली आस्क्ड, लेकिन आपको दिमाग में इसको रखना ज्यादा जरूरी है ना. दैट यू शुड नो एटलीस्ट दीस थिंग्स. सैचुरेटेड लिखा है तो क्या मतलब हुआ है ना? अनसैचुरेटेड मतलब क्या है?
Right, next, factors affecting solubility of solids in liquid. Solids in liquid. नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, हम अगर सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे देन डिसोल्यूशन कैसे होगा? सो इट डिपेंड्स ऑन दी nature of solute. That means what solute we are adding. So for example, if you add sugar into water and salt into water, ठीक है, so the solute is different and both of them dissolve in different rate, है ना? Sugar it dissolves a bit with a more difficulty and salt it dissolves quite easily. And also, for example, if you are going to mix, let us suppose what, in honey, if you are going to mix something, it will be a bit difficult than in water. Second is pressure, and pressure it has no effect. No effect. As solids are rigid, है ना? So solid से pressure का कोई भी effect नहीं है. Third is temperature. ठीक है, टेम्परेचर में दो टाइप है. If the dissolution is exothermic, then what will happen? And if the dissolution is endothermic, then what will happen? First of all, if when you are dissolving, dissolution is endothermic, then solubility is directly proportional to temperature. As you are going to increase the temperature, the solubility will increase. But if this dissolution is, exothermic, then in that case, solubility is inversely proportional to temperature. ठीक है, and this follows the thermodynamics that we have studied. Lee-Chatter's principle के according है ये. Any endothermic process, it is favorable at high temperature. Any exothermic process, it is favorable in lower temperatures. ठीक है, so these are the different factors that affect the solubility of solid. यहाँ पे temperature वाला ही main है. After this, you will write factors affecting solubility of gas and liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. Number 1, you will write again nature of solute and solvent. ठीक है, second is temperature. टेम्परेचर में क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा. इफ यू आर गोइंग टू हीट समथिंग तो उससे वेपर्स निकल जाएंगे. And we are talking about gas inside liquid, so obvious है that if gas is inside liquid and if you are heating it, then gas will evaporate more easily. Gas is going to get away from the liquid state very easily. So solubility is what? Solubility is inversely proportional to temperature. When the solute is gas, you will write on increasing temperature, the gas escapes easily and solubility decreases. Solubility decreases. Third is प्रेशर. ठीक है, नाउ अगर आपके पास ज्यादा प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर गोइंग टू प्रेशराइज समथिंग किसी कंटेनर में, ठीक है, if you are going to add any gas with high pressure, then that because of that
high pressure, what is going to happen? The solute particle will dissolve more easily. जितना कम pressure होगा उतने धीमे धीमे वो क्या होगा, dissolve होगा. So solubility is directly proportional to the pressure. Solubility directly proportional to the pressure. ठीक है, both the things, at what pressure you are adding the solute particles. And यहीं पे आपके पास एक statement है, you will write the solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to the presence of, rather wait a second, directly proportional to presence में pressure, presence of high pressure नहीं, just pressure, to the pressure at which the gas is added. ठीक है. Now here only we have to study a law. The first law that we are going to study is Henry's law. Okay, so it says partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. It says pressure, it is directly proportional to mole fraction of the solute, chi v. So pressure will be equal to, there will be a constant, and that is known as Henry's constant into chi v. Okay, what is this? This is known as Henry's constant. ठीक है, बहुत आसान सी बात है. That, for example, if you are having a solution in which there are gas particles, then obviously if you have more gas particles inside the solution, then what is going to happen? These gas particles will be leaving out and escaping the solution very easily. If you have more gas particles, so the escaping will be higher. The escaping capacity will be higher. And that is why there will be more vapors just above the solution. And these vapors are what? Of the gas that is dissolved inside the solution. And when you have more vapors here, they will exert more pressure. So that's it. If you have more gas dissolved here, they will escape more and they will give you more pressure on the walls of the container. And this is the formula. Pressure, it is equal to Kh into chi v. Now here we have Henry's constant. First is Kh is different for different gases. Obviously बात है. Now Kh, it also tells you about the escaping capacity, है ना, कितनी आसानी से कोई गैस escape कर रहा है. ठीक है. That is also, that's what Kh or Henry's constant is really telling you about. ठीक है. So if you have some gas which is not very easily escapable, then उसका Kh low होगा. ठीक है. Second, right, you will write Kh tells about the, 3 point में लिखेंगे, Kh tells about the escaping tendency
of a gas. Therefore, higher KH means higher escaping tendency. If the escaping tendency is higher, that means you're dissolving something inside the solution, but it is escaping easily. That means वो dissolve अच्छे से नहीं हो पाएगा. ठीक है. So if escaping tendency is higher, then it means and higher KH means higher escaping tendency and lower solubility. सिंपल सी बात है, यानी कि solubility की अगर हम बात करें, solubility of a gas, it is inversely proportional to the Henry's constant. Okay, this is second point. Third point regarding Henry's constant is the unit. KH. ठीक है. As we know, KH is equal to P. देखिए KH का फॉर्मूला क्या होता है? We can derive that unit. KH is equal to pressure upon the mole fraction. है ना? प्रेशर क्या था आपके पास? प्रेशर इज इक्वल टू KH into chi b. तो KH क्या हो जाएगा? Chi b will go down and you'll have pressure upon chi b. So the unit of KH will be what? This is pressure. Pressure किस में हो सकता है? It can be in bar, it can be in ATM, it can be in Pascal, it can be in millimeters of Hg. ठीक है. So all of these are what? All of these are units of pressure. And the other thing is chi b. Chi b क्या है आपके पास? Chi b it has no unit. ये यूनिटलेस है ना. ऊपर भी मोल्स होता है, मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय द टोटल मोल्स, मोल्स एंड मोल गेट कैंसिल एंड इट इज व्हाट? इट इज यूनिटलेस. So the unit of KH, it is what? Units of KH can be either ATM or it can be bar, it can be Pascal or it can be mm of Hg. Make sense? Yes or no, please tell me till here. और समझ में आ रही है? हाँ जी बताएं. Any doubt till here? No, sir. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. Fourth thing is the effect of temperature. So when you are going to increase the temperature, then more gases will escape. So if the temperature is increased, then solubility decreases. You have seen that. ठीक है. तो उसी तरह से आपके पास क्या होगा? If solubility is decreasing, then what will happen? The KH will increase. ठीक है. और अगर हम ये भी बात करें, जब KH भी बढ़ता है, then also we say that solubility is decreasing. From here we can say that जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा. No, because KH is telling you about the escaping tendency, and escaping tendency of any gas will increase on increasing the temperature. If you're going to increase the temperature, this gas will escape much easily. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी, आगे बढ़े. Anyone still writing? If not, then चलिए एक सवाल कीजिए. Please try this.
I am going to give you guys 2 minutes for this. Doesn't require 2 minutes, but still, थोड़ा देख के आप समझिए सवाल को, इसमें 2 मिनट लग सकता है. You don't need to write the question. Yeah, I've got one answer. ठीक है, I will discuss it like in 1 more minute. 1 minute is there. आप सवाल करके देखिए. The 2 minutes are over. हाँ, देखिए, जब भी आपको ना अरेंज द फॉलोइंग के सवाल दिए जाए, जो कि होने ही वाला है, इफ यू आर हैविंग एमसीक्यूज, ठीक है, तो इस तरह के सवाल जरूर आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी व्हाट हैज बीन गिवन टू यू एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, इट वुड हैव बीन वेरी बहुत ही ज्यादा आपके पास क्या बोले हम, इट वुड बी फूलिश ना टू गिव यू द सॉल्युबिलिटी एंड आस्क यू द सॉल्युबिलिटी. है ना, बहुत ही फूलिश हो जाएगा कि अगर आपको केच दिया हुआ है और केच की ही वैल्यू को अरेंज करने के लिए बोला गया है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज व्हाट इज गिवन, द केच वैल्यू हैज बीन गिवन and what is given their solubility, and you have to kh का value दिया हुआ है, arrange this following in the increasing order of solubility. So there must be a relationship between kh and solubility. What is the relationship? That relationship is solubility, it is inversely proportional to kh. ठीक है, ये आपने रिलेशनशिप लिख दिया. अब इसके बाद आपको जो वैल्यू दिया हुआ है ना, व्हाट आर दीज थिंग्स, वी हैव आर्गन, वी हैव CO2, वी हैव HCHO एंड वी हैव CH4. अब इसके बाद यू आर गोइंग टू राइट द KH व्हाटएवर इज गिवन. क्या है KH आर्गन का? इट इज 4.039. CO2 का कितना है? CO2 इज 1.67. HCHO में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज 1.83 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, सो 1.83 10 इंटू 10⁻⁵. CH4 का 0.143. 0.143. ठीक है, अब यहाँ पे आप ना KH के वैल्यूज को अरेंज कर लीजिए. ठीक है, KH के वैल्यूज को अरेंज कीजिए. तो आर्गन इज हैविंग हाईएस्ट, फॉलोड बाय किसका है? फॉलोड बाय 1.67 CO2, which is followed by CH4, and the least is HCHO. Does this make sense till here? Yes or no? Please tell me. यहाँ तक समझ में आया? कोई Yes. दिक्कत यहाँ तक? नो सर. नहीं ना? अब then you are going to talk about the solubility. Solubility का inverse relationship है, so you will write the same things but you will just put different sign. आर्गन की जगह आर्गन, CO2 की जगह CO2, CH4 की जगह CH4, HCHO की जगह HCHO. बस आपको साइन उल्टा कर देना है. ठीक है, दैट मींस द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इज फॉर HCHO. अब देख लीजिए हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी HCHO यहाँ पे है इस ऑप्शन में. आर्गन, अच्छा ठीक है, तो इधर चेंज हो रहा है. CO2 वाला कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन है. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब देखिए, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको, एंड आई एम राइटिंग एवरीथिंग डाउन देन ओनली. है ना, क्लियर भी लिखना है सब कुछ. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम लाइक दिस, बट फंडा ये रहेगा आपका.
सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। जो चीज गिवन है एंड व्हाट इज आस्क्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। देन व्हाट इज गिवन यू विल अरेंज इट इन द टर्म्स ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, और उसके बाद फिर आप देखिएगा व्हाट इज आस्क्ड, if it is directly proportional then it will be the same order, if it is inversely proportional then the order will be reversed, that's it, ठीक है। इसी like try to apply this particular method whenever you are doing, तो कहीं पे गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे, we'll get exact answer as we have got here, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। ठीक है, ग्राफ फॉर हेनरीज लॉ। ग्राफ फॉर हेनरीज लॉ, जो पहला ग्राफ बनेगा आपको, सी ईच एंड एवरी ग्राफ इज मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ का से पहले क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, तो P इज इक्वल टू KH into chi p. We have this Henry's law formula. Now, if you see here, if I take this as the y-axis, this as the x-axis, and this is what? It is a constant. So y is equal to mx type of graph is made. ठीक है, इसमें ना एक होता है ग्राफिंग का, होता है ना इसमें ग्राफ बनाने का, ग्राफ सॉल्व फॉर x एंड वेरी बिग ग्राफ बोथ साइड्स इन 2D, थोड़ा सा देखेंगे एक बार। I have to write the equation. If I don't write the equation, then I will get the graph. Round y is equal to mx. Select it, then I have to click on mass, select an action, graph in 2D, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा, what type of graph do we have here? Tell me, a graph that is passing through the origin, make sense, yes or no? Yes, sir. ठीक है, let me just see, थोड़ा सा let me just try to see one more thing, delete क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा y and x यहाँ पे, if I do something like this, just give me a second, है ना, just give me a second। P is equal to KH into chi b, ठीक है। लेट मी सी, इसका ग्राफ भी डायरेक्टली बन जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c में रखना पड़ेगा हमको, ठीक है, सारा टाइम। चलिए ग्राफ तो खैर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, एंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज m का मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, kh। सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, passing through the origin, the slope of this graph is going to give you, this is your pressure in this axis, chi b in this axis, ठीक है, और आपके पास स्लोप इज इक्वल टू एम, एम नहीं सॉरी के एच, है ना, के एच है एम यहाँ पे। सेकेंड इज देखिए काई की जगह ना वी कैन हैव काई ए ऑल्सो, तो आपके पास जो पी होगा दैट इज के एच इंटू वन माइनस काई ए, वन माइनस काई ए, बिकॉज काई ए प्लस काई बी इट इज इक्वल टू वन, सो I can say chi b is equal to 1 minus chi a, and this will be equal to kh minus kh into chi a. This is what P now. यहाँ आपके पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास
the graph that we can have is y is equal to m, ठीक है, and this is नहीं, y is equal to m, y is equal to c, और यहाँ पे हो जाएगा mx. This is y, this is x, तो x के साथ होगा slope, and then you will have an intercept. So this is an intercept form. Intercept form में आपके पास जो graph होगा, it will look something like this. The slope is negative slope, that is why you will have a downward slope like this. ठीक है? As you can see, m is what? Minus k. बाकी सारी चीजें यहाँ पे same है. That is pressure, that is chi b. No, in this case we have chi a, and this is the slope. Slope, it is equal to minus of kh. The intercept here that we are having, c, this is equal to what? kh, the Henry's constant. ठीक है? So these are the two graphs. Please write this down. Raise your hand once you're done. Ready for Rabah and Fadil? Everyone is done? No. Next is application of Henry's law, quite important. इससे mostly आपके पास काफी इससे सवाल आते ही हैं generally, है ना? Applications of Henry's law बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा. Applications of Henry's law. ठीक है? तो applications जो है ना, you are going to write it from the textbook itself, अपने words में जैसे भी करके. I am just going to explain it to you guys. ठीक है? तो ध्यान से बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा. और आपको लिखना कहाँ से? The page number it is 42, 43. ठीक है? एंड उसमें एक एग्जाम्पल के जस्ट बाद है, एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल 2.4 या 1.4. अगर आपके पास न्यू बुक है देन इट इज द फर्स्ट चैप्टर, इट विल बी 1.4. इफ इट इज एन ओल्ड बुक इट विल बी 2.4. ठीक है? तो पेज नंबर 42, 43 में है, दोनों में. ठीक है? आफ्टर एन एग्जाम्पल दैट इज 2.4. Now there are three applications, तीनों को समझेंगे बिल्कुल आराम से, आपको लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है. सबसे पहली चीज है आपके पास, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिगार्डिंग द सोडा वाटर. ठीक है? क्या है? सोडा वाटर. सो सोडा वाटर इज हैविंग CO2 and CO2 is mixed with water at high pressure. Why? To increase the solubility. जितना ज्यादा pressure होगा उतना ही ज्यादा solubility होगा. That is a complete direct application of what? Henry's law. So first is what? CO2 is added, don't write, is added with high pressure to increase solubility. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा. दैट इज when you open any bottle of soft drink, it releases gases. क्योंकि जिस प्रेशर पे वो बॉक्स, जिस प्रेशर से हमने उस बॉटल को बंद किया था, दैट प्रेशर इज नॉट नो मोर प्रेजेंट. आपने जैसे ढक्कन खोला, द प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू 1 atm. तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है वैसे ही कुछ CO2 मॉलिक्यूल दे एस्केप आउट. ठीक है? So when you are adding at high pressure, the solubility is high. This is one example. इसको आप याद रखिएगा, पेप्सी वाला एग्जाम्पल. ठीक है? दिस इज व्हाट? पेप्सी. तीन है, तीनों के लिए हम बता देंगे, तीनों को याद भी रखना आपको, है ना? You have to remember everything. That what are the three applications? If they can ask of Henry's law, then you have to list those applications. If they ask the reason why CO2 is added with high pressure in soft drinks, in soda water, then you will say, according to Henry's law, solubility increase with increase in pressure. That is why we add CO2
into soft drinks at high pressure. ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, प्लीज सी, we have here sea and here you have mountains. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट आपके पास ये ब्लू पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज, लेट अस सपोज, बी पॉइंट. टेल मी वेयर विल यू एक्सपीरियंस मोर प्रेशर, ए और बी इन द चैट प्लीज. कहां पे आप ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, एट सी लेवल और एट टॉप ऑफ अ माउंटेन? टेल मी इन द चैट वेयर विल यू फील मोर प्रेशर, ए और बी. वेयर विल यू फील मोर प्रेशर, ए और बी? सोच के जरा बताइए ऐसी. Okay, Safia, can you please explain your answer? Sorry, sir. Can you explain your answer? ओ, आपने आंसर इसका नहीं दिया है ना? ओ, ये पुराना आंसर है आपका. ओके. Adil and Mariam Khatun has answered for this. I'm waiting for others. Can anyone else answer? Sorry, Safia, I saw that A. तो लेकिन that was for MCQ. I thought this is for this question. Anyone else? Arslan, Krishnapriya, Safia, Raba. किसी को नहीं आ रहा जवाब. देखिए, see here. Why are you feeling any pressure right now, guys? Please tell me. Answer me. Are you feeling any pressure right now? Answer yes or no quickly. क्या आप पे कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? अरे बोलो भाई, एग्जाम के अलावा फिजिकल. क्या आप पे कोई प्रेशर? जी अरसलान. Yes, sir. Atmospheric pressure. वेरी गुड, करेक्ट. नो, मरियम खातून, आप पे एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं लग रहा अभी? जी बताएं. यस मरियम खातून, यस और नो? यस ना, तो प्लीज रिमेंबर. तो यू आर फीलिंग एक एटमॉस्फेयर का. ठीक है, तो अब बताइए. सी, इफ यू आर एट सी लेवल यू विल फील इतना आपको एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर और झेलना पड़ेगा ना. ठीक है, व्हेन यू आर इन अ माउंटेन, देन इन माउंटेन यू विल नॉट बी, ये जो आपके पास ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर क्या, दीज आर गैसेस ओनली. ये गैस का ही प्रेशर होता है बेसिकली. बट ऑल ऑफ दीज गैसेस आर नॉट, इतना गैस आपके पास नहीं है माउंटेन में. सो एट बी पॉइंट यू हैव लेस एटमॉस्फेयर, हम बोल रहे हैं इसका मतलब यू हैव लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज बिकॉज यू आर अबव, आप जितना ऊपर जाते जाएंगे गैस उतना ज्यादा ही कम होता जाता है. इफ यू हैव लेस गैस तो आपका प्रेशर भी कम पड़ेगा. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है किस वजह से? It is because the atmosphere, it is having gas molecules. Those gas molecules are attracted due to gravity, and when they are attracted due to gravity, they are applying a pressure. That pressure is utna, that pressure is still there at point P at mountains, but it is not at the level that you are having in sea level. That's समझ में आ रही है? Yes or no, please tell me. अरे बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. What about others? आया समझ में? मरियम खातून. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, तो इफ एट बी यू आर हैविंग लोअर प्रेशर, तो हम ये चीज कह सकते हैं आपके पास ए में क्या होगा. एट ए यू विल बी हैविंग प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 atm. बी में आपके पास जो प्रेशर होगा दैट विल बी लेस देन 1 atm, दैट विल बी लेस देन 1 atm. नाउ इफ आपके पास, आपको जो बॉडी है, इट इज अकस्टम टू द प्रेशर ऑफ 1 atm. It is completely accustomed to what? The pressure of 1 atm. That is why when you go to hilltops, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर 1 atm से कम हो जाता है. And when the pressure is less than 1 atm, the oxygen that is dissolved in your, blood, it also lowers. Because oxygen को क्या चाहिए, 1 atm pressure to be at a, जो concentration चाहिए, that concentration at in the blood will only be possible if the pressure is 1 atm. If you are decreasing the pressure, the amount of oxygen will also be decreased, because oxygen is a gas dissolved inside liquid. Pressure कम होगा तो it will escape out. So that is why what will happen in hilltop, कहाँ पे, B point पे,
oxygen is not dissolved properly. Oxygen is not dissolved properly where? In blood. उससे क्या होगा? Therefore dizziness and weakness. ठीक है? And this would lead to a disease that is known as anoxia और altitude sickness. ठीक है? तो एक था आपके पास क्या? पेप्सी, दूसरा है पहाड़। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है पहाड़। लेट अस सी द थर्ड एप्लीकेशन। तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है पानी। ठीक है, पानी का मतलब क्या? इन डीप सी डाइविंग्स इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एट सी लेवल, है ना? डीप सी डाइवर इट इज ही इज एट सी लेवल। एट सी लेवल द प्रेशर इट इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। You was cracking in again. Explain this blood part. अच्छा अच्छा। आई एम सेइंग दैट प्लीज कीप योर माइक ऑन। प्रेशर एट माउंटेन विल बी लेस देन 1 atm। Yes, ये sir. समझ में आया आपको? ठीक है। Yes, sir. Now, Thank you. ठीक है, इस प्रेशर इज लेस देन 1 atm, तो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम हो चुका है और ऑक्सीजन को आदत है, जो ब्लड में आपके पास ऑक्सीजन है, आपकी बॉडी को आदत है 1 atm प्रेशर की। सो द ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड एट 1 atm, इट विल बी सम अमाउंट। इफ यू आर लोअरिंग द प्रेशर देन द ऑक्सीजन विल एस्केप आउट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो व्हेन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑक्सीजन विल नॉट बी डिसॉल्व्ड प्रॉपर्ली इन द ब्लड। मेक सेंस? Okay, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. अब आते हैं हम लोग डीप सी डाइविंग। इन डीप सी डाइविंग वी आर एट सी लेवल राइट नाउ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहाँ पे हम लोग अभी बताइए? सी लेवल पे। ठीक है, व्हेन यू आर एट सी लेवल देन आपके पास ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं। ठीक है, इन द एयर द मैक्सिमम गैस दैट वी हैव इज नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन तो डिसॉल्व नहीं होता ऑक्सीजन में। दैट मींस नाइट्रोजन इज नॉट इजीली डिसॉल्व एट सी लेवल। N2 इज नॉट सॉल्युबल। What is not soluble? Nitrogen gas is not soluble. ठीक है, इट इज नॉट सॉल्युबल। फिर आप कहाँ गए? यू डाइव्ड इन, आपने डाइव इन किया। ठीक है, ना इनिशियली जो जितने भी लोग थे ना, जिन लोगों ने सिलेंडर्स गैस सिलेंडर बनाया था फॉर डीप सी डाइवर्स, दे सेड दैट वी शुड फिल एयर ओनली इनसाइड द सिलेंडर्स। सिलेंडर में उन्होंने क्या ऐड कर दिया? एयर ऐड किया। व्हाई? बिकॉज एयर की ही आदत है हमें। सो उन लोगों ने 70% अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, है ना, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर अप्रोक्सीमेट। 70% उन लोगों ने नाइट्रोजन डाल दिया, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 28% इन्होंने ऑक्सीजन डाल दिया, एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस उसका कुछ मिक्सचर वगैरह उन्होंने डाल दिया होगा 2% का। ठीक है, अब क्या हुआ? एज सून एज यू गॉट इनसाइड डीप सी, आप जैसे ही समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्लीज रिमेंबर द एयर इट हैज सम प्रेशर, वाटर का प्रेशर उससे ज्यादा होता है। सो एज यू आर गोइंग डीप इनसाइड द सी द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। अब समुद्र के अंदर आपके पास जो प्रेशर होगा डीप सी, दैट विल बी ग्रेटर देन 1 atm, and when the pressure is going to increase, solubility of N2 is also going to increase. Solubility of N2 increases. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सोनोपी चलनी, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो जल्दी। हाँ या ना? जल्दी No, बताओ। sir. पक्का ना? ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। सी लेवल पे प्रेशर वाज 1 atm, as you dived inside the sea then what will happen? The pressure will increase and the solubility of N2 will increase. अब क्या होगा? इन द ब्लड वेसल्स, इन द ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपके पास वेन है और इसमें आपके पास बढ़िया से ब्लड जा रहा है। ठीक है, और ब्लड जो है, दिस इज योर ब्लड। ठीक, एंड नाउ वी हैव सम डिसॉल्व्ड N2 इन इट। ठीक है, अब N2 का डिसॉल्व होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉब्लम? बिकॉज N2 इज मोस्टली इनर्ट, है ना, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। इफ इवन इफ N2 इज डिसॉल्व्ड इनसाइड द ब्लड सिस्टम, तो बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? व्हेन यू कम बैक। वापस तो आएंगे ना? वापस तो आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई एक्वामैन तो है नहीं कि समुद्र में ही वहां पे पूरा उनका महल वगैरह सब कुछ है। आप वापस आए, यू विल कम बैक। व्हेन यू विल कम बैक टू द सी लेवल,
व्हाट इज द प्रेशर एट सी लेवल? टेल मी गाइस, प्रेशर क्या होता है सी लेवल पे? बोलो भाई, प्रेशर क्या होता है सी लेवल पे? प्रेशर क्या होता है? जल्दी भाई जल्दी। व्हाट इज द प्रेशर एट सी लेवल? अरे यार इतना टाइम लगाएंगे तो भाई बताइए कैसे होगा। व्हाट इज द प्रेशर एट सी लेवल? अरे लिखा हुआ तो है यहाँ पे 1 atm, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? सी लेवल पे प्रेशर होता है 1 atm गाइस। इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। फिर हम बंद कर देंगे यार, ऐसे हमको नहीं पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, प्रेशर इज व्हाट? 1 atm। तो अब बताइए, आंसर आना चाहिए, डीप सी से जब आप सी लेवल आए तो प्रेशर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? कंपेयर द प्रेशर एट डी से। आवाज नहीं आ रही है क्या? यस मरीम, करेक्ट। प्रेशर डिक्रीजेस when the pressure will decrease the solubility of N2, that will also decrease। अब जब solubility of N2 is decreasing तो नाइट्रोजन जाएगा कहाँ? वो तो ब्लड वेसल में था ना आपके। It was there inside the blood। Now when the solubility decreases it will escape out of the blood। Now when it is escaping out then the problem happens because a vacuum and a bubble is created of, मतलब वो वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो जा रहा ना। N2 था, अब वो निकल गया बाहर। So there, the space which was occupied by nitrogen N2, the space which was occupied by N2, that is empty now। अब when you are having ऐसे bubbles जब होते हैं ना, then it is going to cause hindrance in the blood flow। अगर आपके पास अनडिजॉल्व चीज और वेपर है, वैक्यूम है, तो इट इज गोइंग टू कॉज हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ व्हेन प्रेशर इट इज इक्वल टू 180 once again, N2 releases or escapes forming bubbles in blood। ब्लड में क्या आ गया? बबल्स आ गए। अब जैसे ही बबल्स आएंगे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द फ्लो ऑफ ब्लड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। फ्लो ऑफ ब्लड इज रिस्ट्रिक्टेड। कुछ बैरियर आ जाएगा उसमें ना, फ्लो अच्छे से नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड। एंड इफ द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग, तो ब्लड का काम क्या होता है? मेन ब्लड का मेन काम होता है इट हैज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी फॉर जनरेटिंग एनर्जी, है ना? फॉर जनरेटिंग एनर्जी। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी। मेक सेंस? द फ्लो ऑफ ब्लड इज रिस्ट्रिक्टेड। अब फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से, रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, फिर से वही सेम चीज, वीकनेस और डिजीनेस। ठीक है, एंड जब ये वीकनेस और डिजीनेस होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज व्हेन यू गेट डाउन टू द डीप सी लेवल एंड देन यू कम बैक एंड देन फिर बबल्स की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, दिस डिजीज इज नोन एज व्हाट? बेंड्स। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो बताएं यहाँ तक। कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो अब आपका काम क्या बचा? what you are going to do is you are going to write this down from the textbook। एनसीईआरटी लीजिएगा, प्लीज नोट दिस डाउन। प्लीज नोट दिस डाउन, पेज नंबर 42 से 43 आफ्टर एग्जाम्पल 2.4 यू हैव दीज 3 एप्लीकेशन। इसको लिख लीजिएगा। क्या है 3 एप्लीकेशन? याद रखना है, पेप्सी, पहाड़ और पानी।